Hello and Assalamu alaikum, dear students of class 8. We are in the chapter Force and Pressure in your science, and in the subtopic we are reading types of force. We know there are muscular force, frictional force, magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. So dear students, there are in these 5 forces there are contact forces. There are 2 contact forces, that is muscular force and friction force. We have read in last class muscular force, and today we are going to read frictional force, which is a contact force. Dear students, frictional force is the force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force. Sorry for some misspellings. This is one body over another body, यानी बच्चों कि एक चीज दूसरी चीज से जब मिला हो तब फ्रिक्शनल फोर्स पॉसिबल होता है. इन्हें दोनों में कांटेक्ट होना चाहिए, इसलिए इसका नाम ही है कांटेक्ट फोर्स. दोनों में एक जोड़ होना चाहिए, एक टच होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए, तभी तो फ्रिक्शन हो जाता है. एग्जाम्पल देते हैं. बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप्स व्हाइल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस. बॉल जो होती है हम देखते हैं, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो चाहे फिर वो फुटबॉल हो, जब बड़े मैदान में ये ग्राउंड के ऊपर चलती है, मूव करती है, तो कुछ डिस्टेंस जाकर ये रुक जाती है. ओके, as we know that a force is required to stop a moving body. मगर एक मूविंग बॉडी को जो अपने पढ़ा पहली एक फोर्स चाहिए रोकने के लिए. दिस मीन्स दैट a force is exerted by the ground on the moving ball which opposes its motion and brings it to stop. इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड है हमारा, तो ये एक फोर्स अप्लाई करता है जो इस गेंद के मोशन को अपोज करता है, और ये गेंद जो है स्टॉप हो जाती है. सो दिस फोर्स विच अपोजेस द मोशन of ball on the ground is known as frictional force. So we can now define the frictional force as the force which always opposes the motion of one body over another body is called frictional force. As we have already told that a ball moving on the ground slows down and then stops due to the friction force between the ball and the ground. Okay, so dear students, in this case the two surfaces are in contact, that is means ground and ball, the surface of the ground and the surface of the ball. Frictional force is also known as force of friction or just a friction, सिर्फ friction भी कह सकते हैं. Dear students, if we stop pedaling, one more example, if we stop pedaling a running bicycle, जो हमारा बाइसिकल चलता है, तो अगर इसको जब स्टॉप करते हैं, पहले पैडल देना बंद करते हैं, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता से फिर बंद हो जाता है चलना, एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, यानी कुछ देर कुछ फासला तय करके फिर रुक जाता है. द बाइसिकल मूविंग ऑन द रोड स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ द बाइसिकल एंड द रोड. हमने ब्रेक लगाई, लेकिन अब ये कुछ और फासला तय करके हम रुक जाता है. कैसे रुकता है फिर? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन हो जाती है रोड के साथ. ये जो साइकिल टायर्स होते हैं रोड के साथ फ्रिक्शन हो जाती है, रगड़ लग जाती है, और एक फोर्स अप्लाई हो जाता है रोड की तरफ से, एक रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे, तो इस तरह जो है साइकिल रुक जाती है. दिस फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन बाइसिकल एंड ब्रिंग्स इट टू स्टॉप. In this case, the two surfaces, the contact in the contact are the surface of the road and the surface of tires of this bicycle. Similarly, हम और एक मिसाल ले सकते हैं स्कूटर की, कार की, हैं
जब moving on the road, they come to the rest, it stops due to the frictional force when engine is switched off, and then it to some distance, it after covering some distance, it come to stop due to frictional force, maybe road and these tires. We can take another example when we stop rowing a boat. Now जो हमने देखी है किश्ती, when is moving in water, it also slows down when stops. It slows down and then stops. The boat moving in water slows down and finally stops due to the frictional force between the boat and water. यानी बच्चों ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ ज़मीन पर ही, सड़क पर ही फ्रिक्शन नहीं हो जाती है, हमारे फ्लोर पर घर में फ्रिक्शन हो जाती है, बल्कि पानी के साथ भी फ्रिक्शन हो जाती है, इवन हवा में भी फ्रिक्शन हो जाती है. ये फ्रिक्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि यहाँ जो है हवा के साथ भी फ्रिक्शन हो जाती है. तो यहाँ पर पानी में फ्रिक्शन हो जाती है नाव के साथ, तो फिर नाव जो है आहिस्ता से रुक जाती है. The frictional force exerted by water opposes the motion of boat and makes it stop. So in this case, the two surfaces in contact are surface of boat and the surface of water. The frictional force or force of friction always acts on all the moving objects, and its direction is always opposite to the direction of motion. Since dear students, frictional force arises only when the surfaces of two objects are in touch. दो objects के यहाँ पर होना जरूरी है, touch में हो with each other. Therefore, frictional force is an example of a contact force. So dear students, hope that you understand this. The types of force, that is the contact force, and we did frictional force, that is the type of contact force. So please students, आप घर में रहें, भीड़ भाड़ में न जाएं, ये वीडियो देखते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें. It is much for today. Please also maintain your notebooks. Bye. Assalamu alaikum.